Hello students, good morning. Let's start the chapter hydrocarbons. So what are the hydrocarbons? Hydrocarbons are simplest organic compounds, and they are made up of carbon and hydrogen atoms only, and they contain two type of bonds, that is carbon hydrogen bond and carbon carbon bonds, covalent bond. They do not contain functional group. So saturated hydrocarbons are supposed to be the parent compound of all the aliphatic or organic compound. Therefore, they are also referred as the parent hydrocarbons. Okay, so hydrocarbons means basically the compounds of only carbon and hydrogen, and there is no other element is present in the compound. So now let's watch the classification of the hydrocarbon. So hydrocarbons are classified into basically two parts, that is acyclic means open chain structure hydrocarbons, second cyclic means closed chain hydrocarbons. And acyclic hydrocarbons are further divided into saturated and unsaturated. Saturated means the hydrocarbons which contains carbon-carbon single bond, in which you will studied alkanes, and unsaturated they contains carbon-carbon double and carbon-carbon triple bond. Okay, so in carbon-carbon double bond you will studied alkenes, and in carbon-carbon triple bond you will study alkynes. Okay, now come on cyclic or closed chain hydrocarbon. They are also of two types. First are cycloalkanes and second are cycloarenes. Cycloalkanes means hydrocarbons present in cyclic form, and the aromatic in which the hydrocarbons present in cyclic form with containing alternate double single bond. For example, benzene, it is an example of arenes basically. Okay, so now according to the classification, firstly we will study the saturated hydrocarbon and after that unsaturated. So saturated hydrocarbons में आप पढ़ेंगे alkanes. Alkanes are the saturated hydrocarbons and are also referred as the paraffins. Para means para plus fins. Para meaning little, affine affinity or reactivity, मतलब इनकी बहुत लिटिल जो होता है रिएक्टिविटी होती है, उनको हम बोलते हैं क्या, एल्केन्स. ओके, द साइक्लिक और ओपन चेन साइक्लो एल्केन्स possesses the general formula of CnH2n+2. okay, so according to the number of carbon atom here, you can make the different molecular structures of the organic compound, where n equals to number of carbon एटम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कार्बन यहाँ पे अगर हम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 2 मीन्स टोटल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या जाएगा, C4H10. ओके, C4H10. सो इट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स, इन विच by putting the number of carbon atom you can find out the molecular formula of that alkane. They possesses long chain of carbon atom. The chains may be straight as well as branched. Okay, all the carbon bonds present are single covalent bond hydroalkanes में, and some examples of straight chain alkanes are, for example, CH4 methane, CH3 ethane, CH3 CH2 propane, butane. These are the examples of alkanes. Now cycloalkanes are also regarded as alkanes. They are cyclic alkanes and possesses one or more ring of carbon atoms. They are also saturated and possesses carbon single bond. The general formula of monocyclic cycloalkanes will be CnH2n. For alkanes के लिए it was CnH2n+2, but cycloalkanes के लिए it will be CnH2n+2. While that of bicyclic cycloalkanes is
साइक्लोएल्केन इज CnH2n-2, CnH2n-2। अगर हम इसमें क्या करेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का अगर हम देखेंगे तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स, दैट इज साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का कंपाउंड, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन दैट इज 6 कार्बन, cyclohexane 6 carbon ring compounds. Now come on the nomenclature of alkanes. So trivial common system, the name of the first 4 alkanes, that is methane, ethane, propane and butanes, are trivial. From the 5th alkane onward, the common name are derived from the prefixing the Greek number pent for 5, hex for 6, hept for 7, oct for 8 to the terminals. Okay, so the straight chain alkanes, that is alkanes having no branching, are termed as normal alkanes. All small n alkanes, for example normal butane 4 कार्बन कहा हुआ तो नॉर्मल ब्यूटेन, 5 कार्बन नॉर्मल पेंटेन, 6 कार्बन नॉर्मल हेक्सेन. ओके, so the alkanes having one branch on the second carbon atom of the chain are termed as isoalkane. एक कार्बन ब्रांचिंग में है तो वो कंडीशन हमारी आइसो कहलाएगी. ये आइसोब्यूटेन, इट इज नोन एज आइसोपेंटेन बिकॉज देर आर 5 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. नेक्स्ट, द एल्केन्स हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन आइटम ऑफ कंटिन्यूअस चेन आर रिफर्ड एज नियोपेंटेन. सो ये नियो कंडीशन कॉल्ड एज नियो. यहाँ पे 5 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन. 6 कार्बन, दैट इज नोन एज नियोहेक्सेन. ओके, नाउ IUPAC system. So the IUPAC system are the nomenclature of straight chain and branched chain alkanes have already been discussed. So isomerism, तो IUPAC में तो आप देख ही रहे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, you can write on that condition. Okay, now come on the isomerism in alkanes. So what are the isomerism? Same molecular formula but different structural formula are called isomers and process is known as the isomerism. Okay, but this definition is only applicable for chain isomerism, but the basic and main definition of isomerism is same molecular formula but different physical and chemical properties of the compounds are known as isomers and the process is known as the isomerism. So here we can study the chain isomer basically. So according to that, the definition of isomers या isomerism will be the same molecular formula but different structures are known as the isomers. Process known as the isomerization या isomerism. Okay, so alkanes do not possess multiple bond or functional group, therefore they are able to exhibit only chain isomerism. तो इसमें chain isomerism होगी. Okay, so now the first 3 members methane, ethane, propane do not show chain isomerism because they are unable to exhibit different arrangement of carbon atom in the main chain. तो ये 3 हैं, ये isomerism नहीं शो करेंगे क्योंकि इनके मतलब और कोई दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते हैं, तो ये मतलब आइसोमर्स एग्जिबिट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आप इसका बनाओगे तो किसी तरीके से कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो सिंपल इसी तरीके से ही बनेगा. ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होने चाहिए लेकिन उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से बने हुए स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने चाहिए, तब आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं. ओके, सो अब कम ब्यूटेन पर आएंगे हम. द नेक्स्ट मेंबर ब्यूटेन शो करेगा. तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स होंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा हमारा क्या होगा, आइसोब्यूटेन, या इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं. इसी तरीके से ये इसको मतलब इस फॉर्म में बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर में, थोड़ा कंडेंस स्ट्रक्चर में हम दिखा सकते हैं. ओके, नाउ द 2 आइसोमर डिफर इन देयर कार्बन स्केलेटन. एन ब्यूटेन पोसेसेस स्ट्रेट चेन, वो एक्सप्लेन कर रहा है, whereas isobutane has the branch chain. The carbon skeleton of these isomers are shown below. ये skeleton इसका कार्बन का बनाया गया हुआ है, दोनों की सिर्फ कार्बन दिखाते हैं इसमें. नेक्स्ट, पेंटेन के हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स आर पॉसिबल. सो यहाँ पे 3 आइसोमर्स होंगे,
एक आपका नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड थर्ड जो होगा आपको वो नियोपेंटेन या 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। इन हेक्सेन, so in hexane there are 1 2 3 4 5 isomers are possible। फर्स्ट नॉर्मल हेक्सेन, सेकेंड 2 मिथाइल पेंटेन इस तरीके से बनाया जा सकता है, थर्ड 3 मिथाइल पेंटेन, फोर्थ 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, एंड फिफ्थ जो होगा आपका 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बेसिकली, ओके। फिर नाउ सोर्स ऑफ एल्केन्स। So the important source of alkane in nature are petroleum. Petroleum is the major source of hydrocarbon. It is a liquid mixture which occurs beneath the surface of the earth at the depth usually ranging from 150 meter to 500 meter. It consists of more than 100 hydrocarbons, roughly half of which are alkanes and cycloalkanes. So by from where the petroleum is released, so with the petroleum there are hydrocarbons are also released, because the petroleum is also a mixture of hydrocarbons. And from natural gases occurring over petroleum reserve consist of mainly मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मार्स गैस से भी मिलता है हमको एल्केन, फैट एंड पीट में भी हमको क्या है एल्केन मिलता है, नेचुरल वैक्स जो होता है उसमें भी हमको एल्केन मिलता है। तो फ्रॉम दीज रिसोर्सेज यू कैन फाइंड आउट द एल्केन्स। नाउ कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्केन। सॉरी, all alkanes are formed by sp3 hybridization. In an alkane all the carbon atoms are in a state of sp3 hybridization. So what is the sp3 hybridization? Basically we know that carbon has atomic number of 6, so the electronic configuration of it will be 1s2 2s2 and 2p2, and p orbital is divided into 3 parts, px, py and pz. So there are 2 electrons are present in p orbital. So in ground state 1s2 2s2 and 2p2. When it will come in excited state, then one electron of 2s jump in the p orbital, pz orbital of the carbon atom. So in that condition here in 1s 2 electron, 2s single, and 2p में भी 3 unpaired electron. So 4 hydrogen atom giving their single electron with 4 unpaired electron orbitals and make bond. So the hybridization, in the bond formation there are 4 orbitals involved that are 1s and 3p. So the hybridization will be sp3, okay. So on the basis of sp3 hybridization, the structure of methane will be tetrahedral, okay. So tetrahedral structure of methane, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है और इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ओके। दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन, ओके। सो नाउ कम ऑन इथेन एंड प्रोपेन। सो इथेन एंड प्रोपेन कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। या इसको दूसरा जो होता है, इसको हम ड्यू टू द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम एल्केन्स, द वेरियस कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्केन्स कंटेनिंग 2 or more कार्बन एटम्स डू नॉट लाई इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमेशा इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। ओके, थैंक यू।